daughter at his home at Velakinar in Alapura town with sharp weapons. In Chhattisgarh, 3 security personnel were killed and 14 others were injured in a Maoist attack in Bastar region yesterday. A joint team of CRPF, Special Task Force and District Reserve Guard was patrolling in the border area of Bijapur and Sukma districts in the Bastar division of Chhattisgarh. Maoists ambushed the security forces team near Tekalpudam village in Jagarkunda area. The Jawans also retaliated. 3 security personnel were killed in this encounter. Meanwhile, 14 Jawans were also injured. The injured Jawans airlifted to Raipur for treatment. A camp was also set up by the security forces in this Maoist-affected area. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our Twitter handle at AIR News Alerts. International Monetary Fund (IMF) has increased its GDP growth estimate for India to 6.7% for the current financial year. It is 40 basis points higher than its previous forecast of 6.3%. In its latest World Economic Outlook report, IMF also raised India's upward medium-term GDP growth to 6.5%, a 20 basis point upgrade from its October 2023 forecast for years 2025-2026. The IMF said results reflect a strong public investment and positive labor market outcome. The IMF said India will narrow its current account deficit projection for financial year 24 from 1.8% of GDP to 1.6%. The agency said India continues to be the fastest growing economy among the major economies of the world. In financial year 23, India's GDP had expanded by 7.2% over the previous year. Union Minister of Women and Child Development Smriti Irani and Union Minister of Labour and Employment Bhupender Yadav jointly released an advisory for employees yesterday to promote women workforce participation. It was released at an event organized on women in the workforce for Viksit Bharat in the national capital. The advisory strongly encourages large and MSME employers to create common working facilities, dormitory 3, in comparison to 2017-18. The Indian Navy's warship INS Sumitra, the rescuing fishing vessel L-90 and 19 Pakistani nationals from 11 Somali pirates. The operation was carried out after INS Sumitra safely rescued the Iranian-flagged fishing vessel Iman from Somali pirates. INS Sumitra had 17 crew members on board and people-to-people ties. The Indian Meteorological Department (IMD) has forecast widespread rainfall and snowfall over the western Himalayan region in the upcoming few days. The IMD said these conditions will be present today in parts of Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh and Uttarakhand and will continue for the next 5 days. It has predicted moderate to widespread rainfall over parts of Delhi, Punjab and Haryana, along with strong and chilly winds around the speed of 30 to 40 kilometers per hour. Rainfall is also expected in pockets of West Bengal and northeast India for the next 6 days, along with the hailstorm expected in Arunachal Pradesh, Sikkim and West Bengal. IMD has predicted dense to very dense fog for parts of Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar and Odisha in the morning hours today. In Jammu and Kashmir, the higher reaches and several other places across the Union Territory experienced much awaited snowfall. The Jammu region witnessed rain yesterday, due to which a long dry spell came to an end. Jammu and several other places are witnessing rainfall since yesterday afternoon. 8 flights and 9 trains were delayed in Jammu yesterday due to poor visibility and foggy weather conditions in some parts of the northern region. The chopper service was also affected for several hours due to bad weather at Katra Mata Vaishno Devi. The Met Department forecast widespread light to moderate rain in Jammu region and snow over Kashmir to the next 24 hours. On to sports, the 6th edition of the Khelo India Youth Games will come to a close this evening. Union Minister for Youth Affairs and Sports Anurag Singh Thakur will attend the closing ceremony to be held in Chennai. The games began on the 19th of this month. Over 5,600 sports persons attended the event from all over the country. The sporting events were held at Coimbatore, Madurai and Tiruchi, apart from Chennai, Maharashtra, tops the medals tally with 150 medals, including 53 gold, 46 silver and 51 bronze. The Indian men's hockey team secured a
2024 in Muscat. Uttam Singh netted a hat-trick while Manjeet, Pawan Rajbar and Mandeep Moore, Mohammad Rahil and Gurjot Singh scored goals for India. For Kenya, Moses Ademba and captain Ivan Ludiali were the goal scorers. Right from the start, India took control of the game, challenging Kenya's goalkeeper multiple times in the initial minutes. Despite Kenya's efforts to counter-attack, India maintained aggressive play. The breakthrough for India came when Uttam Singh and Manjeet scored, giving India an early lead. Hindustan Times. Imran Khan ex-FM Qureshi get 10-year jail in Pakistan's Cypher case, informs the Asian Age. The Hindu quoting Defence Minister Rajnath Singh says India-US ties will make the democratic world order stronger. On the situation in Maldives, the Tribune writes, Moitsu government moves Supreme Court to block impeachment. And finally, in a first ever survey, it has been found that India has 718 snow leopards, reports the Times of India. And with that, it's back to you, Abhishek. Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. खबरनामे के साथ मैं असलम में पहले इस वक्त की खास खबरें। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज दोनों ऐवानों की मुश्तरका नशिस्त से सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू के खुतबे के साथ शुरू होगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने फौजी जमीन की गैर कानूनी फरोख्त के सिलसिले में आज रांची में झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगा। पीएफआई और एसडीपीआई के 15 अरकान को केरला के अलपुया कस्बे में बीजेपी रहनुमा के कत्ल की पादाश में सजाए मौत सुनाई गई है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने रवा माली साल के लिए भारत 7% कर दिया है। भारतीय बहरिया ने खलीज अदन में सोमाली कज़ाकों से 19 पाकिस्तानी बाशिंदों को बचाया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स चेन्नई में आज शाम खत्म हो जाएंगे। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज सुबह दोनों ऐवानों की मुश्तरका नशिस्त से सदर जमहूरियत मामला पर आवाज़ उठाई। मीटिंग में मरकजी वज़रा और दीगर पार्टियों के बहुत से रहनुमाओं ने शिरकत की। पेश है हमारे नामनिगार की एक रिपोर्ट। बजट इजलास से पहले हुकूमत की तरफ से बुलाई गई स्कूल पार्टी मीटिंग में बहुत से रहनुमाओं ने शिरकत की। मीटिंग में मरकज ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों को यकीन दिलाया कि हुकूमत हर मामले पर बहस व मुबाहिसे के लिए तैयार है। चूँकि पार्लियामेंट का ये सबसे मुख्तसर इजलास है, लिहाजा तवज्जो सदारती खुतबे और मरकजी अबूरी बजट पेश किए जाने पर मरकूज रहेगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरबराह हेमंत सोरेन ने हुक्मरान इत्तेहाद के अपने एमएलएज के साथ एक मीटिंग की क़यादत की। उन्होंने रियासत में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए अपनी रिहाइशगाह पर इत्तेहाद के कानून साजों के साथ मीटिंग के 2 दौर मुनक़िद किए थे। पीर के रोज़ ईडी के हुक्काम उनसे पूछताछ के लिए दिल्ली में हेमंत सोरेन की रिहाइशगाह पर गए थे। मरकजी एजेंसी ने उनकी रिहाइशगाह से 2 कारें और 36 लाख रुपए नकद जब्त किए थे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने इल्जाम आयद किया है कि झारखंड के वजीर आला राह फरार इख्तियार कर रहे हैं और उनकी अहलिया को रियासत के वजीर आला बनाने की कोई तजवीज़ नहीं है। सजा सुनाई गई है। मामले कारा की एडिशनल सेशंस जज वीजी श्रीदेवी ने ये पाया कि इन 15 मुजरिमों में से 8 मुजरिम बीजेपी लीडर के घर में दाखिल हुए और 4 घर के बाहर मुहाफिज के तौर पर खड़े रहे और 3 इस साजिश में मुलव्वस थे। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के रियासती सेक्रेटरी रंजीत श्रीनिवासन को 19 दिसंबर 2021 को वहशियाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया था। उन्हें अलपुया कस्बे में गलत किनार के मकाम पर उनके घर पर उनकी अहलिया, वालिदा और बेटी के सामने धारदार हथियारों से कत्ल किया गया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने रवा माली साल के लिए मजमूई घरेलू पैदावार से मुताल्लिक़ अपने पहले के अंदाजे में इजाफा करके इसे 6.7% बताया है। पहले 6.3% की पेशगोई की गई थी, लेकिन अब इस फीसद में 0.40% का इजाफा किया गया है। आलमी इक़्तिसादी खाके की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में IMF ने भारत की इस बढ़ती हुई औसत मुद्दत की मजमूई घरेलू पैदावार की शरह तरक्की में इजाफा करके इसे 6.5% बताया है, जो अक्टूबर 2023 की पेशगोई से 0.20% ज़्यादा है।
IMF ने कहा कि इन नताइज से एक मुस्तहकम सरकारी सरमायाकारी और मुस्बत लेबर मार्केट की सूरत हाल का इजहार होता है। IMF ने कहा कि भारत में माली साल 2024 के लिए उसकी माली खसारे से मुताल्लिक पेशगोई में बताए गए फीसद में भी कमी होगी। फिलहाल ये फीसद 1.8 है, जो कम होकर 1.6% रह जाएगा। एजेंसी ने कहा कि भारत दुनिया की बड़ी मईशतों के माबैन सबसे तेजी से उभरने वाली मईशत की अपनी हैसियत बरकरार रखेगा। भारतीय बहरिया के जंगी जहाज INS सुमित्रा ने कज़्ज़ाफ़ी की रोकथाम की दूसरी कामयाब कारकर्दगी अंजाम दी, जिसके दौरान बहरे अरब में मुसल्लह सोमाली कज़ाकों से हमले के 19 अरकान और एक जहाज को बचाया गया। भारतीय बहरिया के बयान के मुताबिक INS सुमित्रा ने सोमालिया के मशरक़ी साहिल से कुछ दूर FV ईमान पर कज़्ज़ाफ़ी की कोशिश को नाकाम बनाकर माहीगीरी के एक जहाज अल-नईमी और पाकिस्तान के 19 बाशिंदों को 11 सोमाली कज़ाकों से बचाया। शहरी आवाजाही की वजारत कल उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या के लिए परवाज़ों के 8 नए रूट्स शुरू करेगी, ताकि मुक़द्दस शहर अयोध्या से राब्ते को फ़रोग़ दिया जा सके और यात्रियों के पहुंचने में आसानी पैदा की जा सके। परवाज़ों के इन नए रास्तों से अयोध्या का राब्ता दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु से भी हो जाएगा। इन परवाज़ों का इफ्तिताह शहरी आवाजाही के वज़ीर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के हिस्सों में सुबह के औकात में घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की पेशगोई की है। मौसमियात से मुताल्लिक़ एजेंसी ने कहा है कि अगले 2 रोज़ के दौरान शिमाल मगरबी और वस्ती भारत के कुछ हिस्सों में कम से कम दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री का इजाफा होगा। अगले 4 रोज़ के दौरान मुल्क के किसी भी हिस्से में सर्द लहर के हालात रहने का इम्कान नहीं है। छत्तीसगढ़ में कल बस्तर कबायली खत्ते में माओ नवाजों के एक हमले में सिक्योरिटी के 3 एहलकार हलाक और 14 दीगर जख्मी हो गए। CRPF मुश्तरका टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की एक मुश्तरका टीम छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन में बीजापुर और सुकमा जिले में सरहदी इलाकों की गश्त कर रहे थे। माओ नवाजों ने जगरगुंडा इलाके में तेकलगुडेम गांव के नज़दीक सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम पर घात लगाकर हमला किया। फौज के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में सिक्योरिटी 3 एहलकार और 14 जवान भी जख्मी हो गए। जख्मी जवानों को इलाज के लिए बजरिया तैयारा रायपुर ले। ये खेलकूद मुकाबले चेन्नई के अलावा कोयम्बटूर, मदुराई और तिरुचि में मुनक़िद किए गए थे। महाराष्ट्र सोने के 53, चांदी के 46 और कांसे के 51 तमगों समेत कुल 150 तमगों के साथ फहरिस्त में पहले मकाम पर है, जबकि हरियाणा सोने के 35, चांदी के 22 और कांसे के 46 तमगों समेत कुल 103 तमगों के साथ दूसरे मकाम पर है। तमिलनाडु 91 तमगों के साथ तीसरे मकाम पर है। इसमें सोने के 35, चांदी के 20 और कांसे के 36 तमगे शामिल हैं। भारतीय मर्दों की हॉकी टीम रोजा क्रिकेट के आलमी कप के सुपर 6 स्टेज के पहले मैच में भारत ने कल जनूबी अफ्रीका के ब्लेमफोंटेन के मकाम पर न्यूजीलैंड को 214 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 295 रन बनाए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 28 ओवर्स और 1 गेंद में महज 81 रन ही समझ सकी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शायर होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने आज से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास से मुतालिक पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी के इस बयान को अहमियत दी है कि हुकूमत हर मामले पर बहस के लिए तैयार। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों से ताउन की अपील। बजट इजलास 9 फरवरी तक जारी रहेगा। रोजनामा मिलाप के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, भारत एक ताकतवर मुल्क है और हमें मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करनी ही होगी। ये बात वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में भारतीय बहरिया की कोशिश से गोल्ड 100.1 पर। वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, इसलिए हालातों को पीछे छोड़ वक्त के साथ चलिए। हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। जी हाँ, हमें भी वक्त के साथ चलना है और वक्त हो गया है म्यूजिकल दिल लगी का। तो आइए चलते हैं आज की
सुरीले सफर पर। आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज साथ हूँ मैं आपके